Before we have already studied about unit cell and primitive translational vector. So today's topic is primitive cell. Okay. So if we go through the definition, so what do you mean by primitive cell? So आम आगुरी primitive translational vector विषय जानते जोटा आम टी रे रिप्रेजेंट करते कैपिटल टी रे. सो एबे जानबा primitive cell विषय. ओके. सो if आम definition देखिबा, the primitive cell is the smallest unit cell in volume constructed by primitives. Okay, so simply we can say the primitive cells are the unit cells. हम आगु unit cell definition भी जानते हैं. Unit cell is the smallest repeating unit in the space lattice. Okay, so गोटे smallest unit जोटा कि over and over repeat है so space lattice रे बा space रे so से complete crystal structure दे. ओके, सो तब हम कहते यूनिट सेल. सो सिंपली आम गोटे यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल बोली कहते. बट सो एटी कौन डिफरेंस आसो यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल विषय सेल भितर कौन डिफरेंस आसो. सो हियर द लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. ओके, सो आम जो एटी यूनिट सेल गोटे कंसीडर करूचे जदि तार कॉर्नर रे केवल कॉर्नर रे ही लैटिस पॉइंट गुडा रहले ताहले हम से यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल बोली भी कहि पारिबा. ओके, सो देन टू डायमेंशनल व्यू रे देखिबा. ओके, सो एठी हमर गोटे डायग्राम अछि. सो एटा गोटे टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. सो ए डायग्राम जदि हमें 1 और 3 ओके नंबर 1 और नंबर 3 को देखिबा ताहले कोन कहि परिबा ना ओनली 1 and 3 आर प्रिमिटिव सेल्स. ओके, why they are primitive cells? Because in both these cases, okay, the lattice points are in corner. Okay, so if we talk about figure 2 and 4, okay, so what is the difference? So there are so many lattice points in the corners. So besides this there are so many lattice points inside these figures. ओके, सो जदि आम ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोली कंसीडर करछे सो केवल 1 and 3 को ही आम कौन कह ना प्रिमिटिव सेल बोली कहि परबा. काहे ना केवल 1 और 3 फिगर ही कॉर्नर रे कौन अछि ना लैटिस पॉइंट गुडा को अछि. बट आउ सब बाकी फिगर गुडा कौन अछि कॉर्नर रे थिबा सहित ता भीतर बा इंटीरियर रे भी लैटिस पॉइंट गुडा को अछि. सो केवल 1 and 3 को हम कौन कहि परबा ना प्रिमिटिव सेल. सो बाकी जो फिगर गुडा रहले सो ताको हम कौन कहबा ना नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, सो दीज आर यूनिट सेल. ओके, बट दे आर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड दीज आर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, सो आम एटा भी कहि परबा जे ए टू डायमेंशनल प्रिमिटिव सेल इज ए पैरेललोग्राम व्हिच मे हैव ऑर्थोगोनल एंगल्स और इक्वल लेंथ्स और बोथ. ओके, सो गोटे आम जो टू डायमेंशनल प्रिमिटिव सेल को जति रिप्रेजेंट करबा टू डायमेंशनल रे सो एटा गोटे पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम माने कोन? सो तार एंगल गुडा ऑर्थोगोनल माने 90 डिग्री हे पारे और सबु साइड गुडा को इक्वल लेंथ हे पारे किबा बोथ केसेस हे पारे. जेते हम पैरेललोग्राम कंसीडर कर परिबा, रॉम्बस कंसीडर कर परिबा, रेक्टेंगल कंसीडर कर परिबा एंड स्क्वायर भी कंसीडर कर परिबा. सो एई प्रकार सब जक बा एई भली स्ट्रक्चर रो प्रिमिटिव सेल मध्य रहि पारे. ओके, सो प्रिमिटिव सेल रो आ गोटे सिग्निफिकेंस कोन ना ए प्रिमिटिव सेल इज ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स एक्जेक्टली वन लैटिस पॉइंट. ओके, सो केमिति वन लैटिस पॉइंट हम सेटा कंसीडर करबा. सो केवल आम जानछे जे कोन गोटे प्रिमिटिव सेल गोटे हो यूनिट सेल जोटा कि जार कॉर्नर रे ही केवल लैटिस पॉइंट गुडा थिबो. सो एबे हम कोन कहले जे गोटे प्रिमिटिव सेल केवल वन कोन ना केवल गोटे एटम ही थिबो. सो आम एबे देखिबा जे सो एटा जो चारटा लैटिस पॉइंट जो अच्छे सो से मिसिकी चारटा लैटिस पॉइंट केमिति गोटे एटम होची. ओके, सो ए फिगर को हम कंसीडर करबा. ओके, सो इफ यू लुक क्लोजली द टोटल पार्ट ऑफ द लैटिस पॉइंट फ्रॉम ईच कॉर्नर which contributes in forming the primitive unit cell is 1. Okay, so कहीं ना एटा गोटे टू डायमेंशनल व्यू. ओके, सपोज आम एटा को भाबिया कोन जदि एटा टू डायमेंशनल आम कंसीडर करछे. सो सपोज एठी गोटे लैटिस सेल रहिला बा एठी गोटे सेल रहिला.
सिमिलरली द राइट साइड रे गोटे सेल रहबो जस्ट आर अपोजिट आर ऊपर गोटे सेल रहबो आर सिमिलरली एपट कॉर्नर रे भी गोटे सेल रहबो माने गोटे लैटिस पॉइंट सो केतेटा कंट्रीब्यूशन होची 1 2 3 4 ओके तापर कोन होची ना आउ गोटे कंट्रीब्यूशन जस्ट तार अपोजिट माने तार फेस रे भी रहबो कहीं ना हमर सब क्रिस्टलटा होची कोन ना 3 डायमेंशनल ओके सो जेहेतु गोटे क्रिस्टल होची 3 डायमेंशनल सो गोटे गोटे लैटिस पॉइंट सो एटा डिपेंड करे सो एटा गोटे पैरेललोग्राम कि रोम्बस कि रेक्टेंगल कि स्क्वायर ओके सो तार लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन ऊपर डिपेंड करे सो जदि गोटे स्क्वायर हेतो सिमिलरली सेटा 1/8 पार्ट्स हो ओके जदि हम 3 डायमेंशन कंसीडर करछु सो सिमिलरली जदि हम ताको एनालिसिस करबा ताहले ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओके जदि ए भली गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेतिबो सो एक कॉर्नर रे जो लैटिस पॉइंट अछि सो तार कंट्रीब्यूशन केते ना 1/6 पार्ट ता माने कोन ए लैटिस पॉइंटटा माने 6टी यूनिट सेल को होल्ड करी रखिबो बा ए गोटे लैटिस पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन केतेटा यूनिट सेल रहबो ना सिमिलरली 6टा यूनिट सेल रहबो सिमिलरली आर कंट्रीब्यूशन केतेटा पे रहबो ना 3टा पे सिमिलरली आर कंट्रीब्यूशन 6टा पे आर कंट्रीब्यूशन 3टा पे सो सेति पे each पार्ट रे हम केते लिख परियो 1/6 1/3 1/6 एंड 1/3 सो जदि हम टोटल आको सम करबा ताले कंट्रीब्यूशन केते आसीबो ना 1 आसीबो सो एटा को हम कहि परिबा यूनिट बा प्रिमिटिव यूनिट सेल सो सिमिलरली जदि हम नॉन प्रिमिटिव सेल कथा कंसीडर करूछे ताले कोन हो सो एगुडा सब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हम शो करिछे ओके सो सपोज एटा होची गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओके सो सिमिलरली एथिरे कंट्रीब्यूशन 1/3 जेम ताते थिला 1/6 1/6 एंड 1/3 किंतु एथिरे कोन थिला ना आ मझिरे किछ भी लैटिस पॉइंट नथिला बट ए फिगर कोन अछि सो ए जो लाइन जॉइन हेची आ ऊपर लैटिस पॉइंट अछि आ ऊपर भी लैटिस पॉइंट अछि सो आ भीतर भी लैटिस पॉइंट अछि ओके सो जदि हम कंसीडर करूचे एटा 1/3 1/6 1/6 1/3 सो जेमते आथर 1 हेतिला सो एटा को 1 हो सो प्लस बाकी आर जो कंट्रीब्यूशन अछि 1 2 3 4 5 6 ओके सो सिमिलरली आर जो कंट्रीब्यूशन आसीबो सो ता पे केते आसीबो ना 1 आसीबो ओके सो टोटल मिसी केते हला ना 2 ओके so we can say the unit cells which possess more than one lattice point is called non-primitive unit cell so since there are two lattice points or two atoms okay so this corresponds to a non-primitive unit cell okay so what is the main property of a primitive cell or primitive unit cell so the main property is that its area is minimum okay so if we consider in two dimension so a unit cell or a unit primitive or primitive unit cell is having minimum area okay and if we talk about three dimension okay three dimensional structure then its volume also minimum okay so in two dimension its area is minimum and in three dimension its volume is minimum okay next we will talk about primitive basis so basis कहले कोन बुझिबा so जेमति कि हमें जानछि basis is the underlying support okay so or imaginary support okay so जेमति कि हमें गोटे घर तयारी कला जेमति फाउंडेशन देथाओ so से भले गोटे कोन ना लैटिस पॉइंट सहित बेसिस मिसी गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे okay so primitive basis कोन so the basis simply it is simple the basis associated with a lattice point of primitive cell okay so जो primitive cell रे जो lattice point अछि ता सहित जो basis गुडा associate हेक अछंती बा join हे अछंती so से गुडा हम कहउचे primitive basis okay so for primitive basis the unit cell is called primitive cell okay so जो हम जो unit cell consider करछे जदि तारे primitive basis रहला so से unit cell को हम कोन कहले primitive cell okay so it contains only one lattice point जेमति कि हम देखिले जस्ट एग्जांपल देखिले so केमिति सबरो कंट्रीब्यूशन मिसी केमिति सब 1 हो
होची गोटे सो गोटे प्रिमिटिव सेल और गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रो सबू कॉर्नर जेतिक सब लैटिस पॉइंट गुड़ाक अच्छी सबूर कंट्रीब्यूशन मिसी केते हम ना टोटल 1 आसी ओके सो फॉर नॉन प्रिमिटिव बेसिस द यूनिट सेल इज ए मल्टीपल सेल and it contains more than one lattice point. So it is simple for primitive lattice or primitive unit cell the it contains only one lattice point. For non-primitive basis or for non-primitive unit cell it contains more than one lattice point. Okay, so it is all about primitive cell and primitive basis.